So hello everyone, this is Akshay here, and today we're gonna cover a very standard problem of the backtracking, that is the solving the Sudoku. So if you're new to this channel, please like, share, and subscribe, and hit the bell icon to get the regular updates. तो ठीक है, हमारे पास एक incomplete Sudoku दे रखा है configuration the times of n cross n 2D matrix using grid. So the task is to solve the Sudoku. For simplicity, you may assume that there will be only one unique solution. सुडोकू के कुछ रूल्स होते हैं यार दैट यहाँ पे हमारे पास 9 क्रॉस 9 का 2D मैट्रिक्स है. ईच ऑफ द डिजिट्स 1 to 9 मस्ट अकर एग्जैक्टली वंस इन द रो एंड अकर एग्जैक्टली वंस इन ईच कॉलम. देयर इज थर्ड रूल एज वेल दैट ईच डिजिट्स 1 to 9 मस्ट अकर एग्जैक्टली वंस इन ईच 3 क्रॉस 3 बॉक्सेस ऑफ ग्रिड्स. ऐसा जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है देन इफ यू अगर आप इस 2D मैट्रिक्स को फिल कर पाए यूजिंग दीज मेंटेनिंग दीज 3 रूल्स देन यू हैव सक्सेसफुली सॉल्व द सुडोकू और हमें वो 2D मैट्रिक्स रिटर्न करना है. ठीक है, ठीक है. तो पहला रूल तो बहुत ही क्लियर है यार. जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये अब रेस्ट ऑफ द रो और इस पर्टिकुलर रो और इस पर्टिकुलर कॉलम में 1 प्रेजेंट नहीं हो सकता, राइट. ये थे दो रूल्स. तीसरा रूल ये था कि अगर आप देखो ये तो 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, कभी भी सुडोकू हमेशा आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा, या फिर 9 क्रॉस 9 या फिर 11 क्रॉस 11 समथिंग लाइक दैट, राइट. 12 क्रॉस 12, हाँ ठीक है. तो हाँ 12 क्रॉस 12 नॉट 11 क्रॉस 11, राइट. तो आप n का स्क्वायर रूट निकालो, n का स्क्वायर रूट निकालो तो क्या होता है 3, राइट. 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट निकालो तो क्या होता है 2, राइट. सो दिस सुडोकू विल कंसिस्ट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्सेस. अगर आप देखो तो ये एक 2 क्रॉस 2 होगा, राइट. सिमिलरली यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, राइट. तो ऐसे ही 9 क्रॉस 9 में 3 क्रॉस 3 के मल्टीपल मैट्रिक्सेस होंगे. तो ये जो थर्ड रूल है 2 क्रॉस 2 में भी ये वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए. लेट्स से यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, राइट. तो ये तो रूल्स हमारे पास. चलो इसको फिल करने की कोशिश करते हैं. तो हम यहाँ पर आएंगे एम्प्टी पोजीशन वाला, हम देखेंगे कि इस रो में ऑलरेडी 1 फिल्ड है तो 2 है, 2 फिल्ड नहीं है तो 2 को फिल करते हैं, आगे बढ़ते हैं. फिर 3 यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है, एक और एम्प्टी स्पेस आने देखा, अच्छा 1 2 3 ऑलरेडी फिल्ड है इस रो में, तो डेफिनेटली 4 ही फिल कर सकते हैं यहाँ पे, राइट. सेकंड रो में आते हैं. अब इसमें देख सकते हैं कि इस कॉलम में इस पर्टिकुलर रो में 1 और 2 ऑलरेडी फिल्ड है, राइट. और इस कॉलम में 1 और 2 तो डेफिनेटली हम 3 से स्टार्ट कर सकते हैं. 3 या तो 4 इसका आंसर होगा, राइट. तो 3 रखते हैं और आगे बढ़ते हैं. तो डेफिनेटली इस रो में वी हैव ऑलरेडी यूज्ड द वेरिएबल 1 2 एंड 3, तो हम क्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं 4. बट इफ यू सी इफ आई यूज द 4 हियर देन दिस विल वायलेट द कंडीशन दैट दिस 4 इज प्रेजेंट ट्वाइस इन द सेम कॉलम. तो हम यहाँ पर 4 नहीं रख सकते हैं. तो व्हाट इज द आइडिया हियर इज दैट वी विल बैक ट्रैक नाउ, राइट. वी विल बैक ट्रैक. हम इसको इस पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करेंगे, राइट. हम इसे वापस से 0 मार्क करेंगे और हम पीछे की तरफ ट्रैक बैक कर जाएंगे यहाँ पे जो 3 प्रेजेंट था उसके पर, राइट. तो अब 3 को भी यहाँ पे मतलब 3 ऑप्शन नहीं हो सकता, राइट. 1 और 2 ऑलरेडी यहाँ पे इस कॉलम में प्रेजेंट है, 3 कैन नॉट बी एन आंसर. तो ओनली द वन एंड ओनली एलिमेंट लेफ्ट इज 4, राइट. ठीक है, अब ये सेटिस्फाई हो चुका है एंड देन दिस 4 इज ऑल्सो सेटिस्फाई विद दिस रो. ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं वापस से इस पॉइंट पे. हम देखेंगे कि 1 2 एंड 4 इस रो में विजिट हो चुका है एंड इन द कॉलम आल्सो 1 2 एंड 4 आर ऑलरेडी देयर. सो हम यहाँ पे 3 रख सकते हैं, करेक्ट. ठीक है, अब आते हैं इस एम्प्टी सेल पे. नाउ वी कैन सी दैट द 1 एंड 2 आर ऑलरेडी विजिटेड इन द रो एज वेल एज द कॉलम. तो ओनली वायबल ऑप्शन इज 3 एंड 4. लेट अस स्टार्ट विद 3. Then again at this empty space 1 2 and 3 is visited and in the column wise 2 and 3, so only viable option is here 4, right. Let us come to this position now. So 2 and 4 is visited, 2 and 3 is visited here, so we can start with 1 1. अब यहाँ पे वापस आते हैं, देखें 1 रख सकते हैं नहीं, बिकॉज 1 ऑलरेडी रो में भी है और कॉलम में भी है. 2 रख सकते हैं नहीं, 2 इज ऑल्सो प्रेजेंट रो एंड कॉलम. 3 कैन वी रिप्लेस 3 हियर? यस 3 कैन रिप्लेस बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट इन द रो और नॉट इन द कॉलम, राइट. ओके, और साथ ही साथ हमें हर बार ये भी मेंटेन करना है कि वो अपने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में भी वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, राइट. सपोज फॉर दिस 3 इज यूनिक इन दिस 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, करेक्ट. तो ये हमें ऐसे फिल करना है, राइट. प्लीज पॉज दिस वीडियो नाउ एंड try to approach this problem with pseudocode and a code by yourself. Okay, let us look at the code now. The same thing which we have done in the dry run will be done in this code as well. थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होगा, बस हमें इस सेफ की कंडीशन देखनी होगी. चलो वापस तो शुरू करते हैं. ओके, सो हमारे पास एक फंक्शन है solve sudoku. हमें सबसे क्या करेंगे, the first and foremost step using these two for loop is that we need to find the first empty cell we encounter in our 2D matrix, right. तो हमें यहाँ पे 2 loop चलाया है, let's state for loop that is iterating in the row and iterating in the column. Once we find the grid value equals to 0, we store that particular row and column indexes in I and j, right. And then we have a flag variable as well कि जैसे ही हमारे पास कोई index मिला है non empty, then mark that is empty is equals to 1, that is we have found an empty cell and just break from that inner loop, right. Now we have break from this inner loop, right. अभी भी जो outer loop है वो break नहीं किया हमने, हमें उससे भी break करना है, right. That is why we have mentioned one more if statement that if is empty equals to 1, that is we have already found
an empty cell by using this inner nested loop. तो ये if statement hit होगा and then again we will break from the outer loop as well. I hope you were able to understand this. So this for loop is nothing that we are founding an empty cell if it is present, right? At the last, let's say there was no empty cell here, and if it will check after this nested for loop, it will check that if after traversing in the whole 2D matrix I still haven't found any empty cell, so that means you have already filled your Sudoku, right? So just true that there is a possible answer for this solving the Sudoku, right? Great. Let us move ahead. Now what we can do, that we were having in our case while we were doing the dry run, we were having 4 cross 4 matrix, right? So for each and every cell we were having 4 options, that is 1 2 3 and 4, but here the matrices are given 9. It is explicitly given mentioned as 9, right? It is not dynamically that we need to, that it is not needed that we get int n equals to grid dot length, right? It is specifically mentioned that you will always get 9 cross 9 matrix. But अगर यहाँ पे 9 cross 9 नहीं होता तो definitely हम यहाँ पे x less than equals to 9 की जगह पे हम grid dot length भी लिख सकते थे, right? So we have a for loop here which is running from x equals to x less than equals to 9 x plus. So this for loop is nothing that we are replacing the empty cell with each and every option. Now we need to check isF. Now what isF is safe is nothing but it is pre-checking these 3 rules mentioned by the question for solving the Sudoku. ठीक है? Now हमने 3 parameters pass किए, that is the row column, the row and column index, the value that I need to place, and the grid, right? So if it is safe to रिप्लेस द वैल्यू, जो हमने ड्राइंग में देखा, हम हमेशा चेक करते थे यार कि ये 2 को यहाँ रखना सेफ है नहीं. वी चेक कि कॉलम में वो वैल्यू नहीं होना चाहिए, रो में वो वैल्यू नहीं होना चाहिए, एंड देन उसके जो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है वहां भी नहीं होना चाहिए, राइट? तो हमें बस इसी चीज को कोड करना है इस सेफ पे. चलो इस सेफ पे आते हैं. Now here we have a very simple for loop which is responsible for checking that particular value if it is not present in the row and column. If it is present in either of them, right, then we need to say that now the safe condition returns you false, that you cannot place this value, right? The third rule, this for loop ensures that you have pre-checked your first and second rule. The third rule, how can we check that? So there is a mathematical formula we have written, right? Okay, so before moving ahead, let me just tell you. So what I'm saying is that what is the index of this particular, or let's say if I divide this particular thing in 2 cross 2, 4 matrix of 2 cross 2, right? तो इसका starting point क्या हो जाएगा? 0, 0. इस मैट्रिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ये जिसमें 3 4 2 and 1 है, राइट? उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, 2. Similarly, for this matrix, the starting point will be 0, 1, 0, 1. It will be 2, 0, right? And for this thing, for the matrix of the starting point of this, that is 4 to 1 and 3, this point would be nothing but 0, 1, 2. It would be third column, that is 2, what? 2, 2. Correct? Now, so let us find for, let's say, if the ith value is 3 and j value is 1, right? So which of the cell it is representing? It is representing this index, I equals to 0, 1, 2, 3 and 1, right? It is representing this one, right? What can we do? Something, can we write some mathematical formula using on this I and j to get this 2, 0? Yes, definitely we can. So the mathematical formula here is responsible for it, that you just do I minus, right, I percent the root of n, right, that is 2, and specifically you do j minus j percent 2. Why are we doing this यार? क्योंकि हमें पता है कि सारे मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 में है, राइट? तो हम क्यों ना जो हमारे पास इंडेक्स वैल्यू प्रेजेंट है उसे परसेंट 2 का जो मैक्स वैल्यू आता है उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आएगी स्टार्टिंग पॉइंट हर एक मैट्रिक्स की. तो करके देखते हैं. So it will be 3 minus 3%. Let me change the color. The red color I think is not visible much. 3 minus 3% will give you as what? It will give you 3. 3% will give you 1. So 3 minus 1 will give you as 2. And then this will 1 minus 2%. No, 1 minus 1% 2. 1 minus 1% 2. And it will give you as 0, right? So definitely I can clearly see manually that this 4 lies in a 2 cross 2 matrix where the starting point is 2, 0, and that is what we have achieved here as well using this formula. Okay, let us use this formula in the code and try to handle this third rule. Okay, so that is what we have done. We have made 2 indices here, that is the row index and this column index, and we have found the starting index of that 2 cross 2 matrix where that particular value is present, where that particular I and j is present, where we have replaced it with x, correct? थर्ड रूल वही हमें चेक करना है कि उस पर्टिकुलर 2 क्रॉस 2 फॉर हियर इट इज 3 क्रॉस 3, बट हमने रन 2 क्रॉस 2 के लिए किया था. सो दैट इज व्हाई वी आर रनिंग अ फॉर लूप, एक्सप्लिसिटली रनिंग द फॉर लूप फॉर
less than 3, a nested for loop, and we are checking for each and every what to say places, that if it is equals to x, then again your safe condition will nullify, it will return false for you. Now if these three condition does not get caught in our safe is safe function, then definitely we are good to go and of placing that value, so we'll say return true, right? Let's get back to the code again. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू प्लेस करना पॉसिबल था, तो हमने प्लेस कर दिया, एंड एल्स और फिर हमें क्या करना है कि जो नेक्स्ट एम्प्टी सेल है हम उनके लिए सेम फंक्शन हमें रिपीट करना है, राइट? सो दैट इज व्हाई वी हैव कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन हियर, राइट? सॉल्व सुडोकू अगेन द ग्रिड to again find the next empty cell and do the same thing, right? So at a time we have seen that इस particular cell पे पहले 4 possible नहीं था, right? 3 possible नहीं था, right? So we backtracked and then we did again. So that is why, and when we backtracked you are actually marking the cell as 0. जिस सेल को आप विजिट कर चुके थे वो गलत आंसर था, जब आप बैक ट्रैक करोगे तो उस पर्टिकुलर सेल को वापस से 0 भी तो मार्क करना होगा. So that is what's happening here, right? Great. Okay, so that's the recursion tree I have drawn for you guys. You can take the reference from here. The exact thing which we have tried once filling this 2D matrix. तो हमारा जो कोड है वो इसमें recursion कैसे फॉर्म हो रहा है मैंने वहाँ पे लिखा है. आपको मैं बस ये पार्ट समझा देता हूँ. तो जब हमने g of 1 equals 1 0 के लिए कॉल किया, that is from यहाँ पे हमने पहले x equals to 3 प्लेस किया था, right? And then we recur for its next empty index, that is g of 1 comma 1, right? The second one 1 comma 1, right? और हमने वहाँ पे क्या इंडेक्स प्लेस किया, x equals to 4 हमने इनिशियली डाला था, राइट? बट देन वी फाउंड दैट यहाँ पे इस सेफ कंडीशन फॉल्स रिटर्न किया, तो हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर गए, एंड सिमिलरली यहाँ से ही फॉल्स रिटर्न कर गए, राइट? तो यहाँ पे x equals to 3 पॉसिबल नहीं था, देन द सेम इट विल चेक फॉर x equals to 4, राइट? तो यहाँ x equals to 4 यहाँ पे पॉसिबल था, एंड देन वी अगेन रिकर फॉर 1 comma 1, राइट? That is this index, and then we place it as 3. Similarly हमने बाकी सब के लिए रिकर किया, and then we got through the answer, right? So this Sudoku problem इनिशियली मे भी आपको लगा कैसे लिखे, बट इट्स ऑल अबाउट द कोड. लॉजिक इसका बहुत सिंपल है, बस इस सेफ कंडीशन लिखने में मेरे को लगता है कि आपको पर्सनली प्रॉब्लम हुई होगी, बट यस दैट इज इट. आई होप द वॉक थ्रू इज नाउ डन फॉर दिस कोड, एंड यस yep, let us compile and run, and once it has compiled and run we will just hit the submit button. There was one additional function here, that is the print grid. So we have just used a nested for loop and print the each and every index of this grid pattern. So don't worry, I will mention the link of the problem in the description, you can try it yourself. Okay, great, the code has been successfully submitted. Now let us see the C++ code and then we shall end this video. Okay, so that is the C++ code that is also running well. So let us just let me just scroll it down for you, because a code walkthrough is not required. It's the same that we have done in the Java. So that's the is safe condition, checking the 3 rules, and then we have a solve Sudoku function. That is the first step to find the empty cell. Once we have found an empty cell, we need to fill it with the 9 possible values for this particular question, right? Else we just have to fill it with the grid.length possible values for this for the Sudoku solver question, right? Then we have again a print grid, and then we can just run a nested for loop and print each and every element in the grid. That's great. So compilation has been successfully the code has been successfully compiled. Let us hit the submit button to see the submission. Great, the code has been successfully submitted as well. Let us analyze the time complexity now. So what is the time complexity now? We can clearly see while we were solving this Sudoku problem using the dry run, how many cells were there? There were n cross m cells, right? Or you can say clearly that there were n cross n cells. For each and every cell you were having 9 options, right? So that means the time complexity would be 9 power n cross n, right? Because the worst case would be that for each and every cell you may have to try 9 times, right? And then you will find the answer, right? So that is why I'm saying that it should be 9 power n cross n. And what is let's see the expected time complexity here as well. So yes, it is 9 power n cross n. So what is the space complexity now? Space complexity is related to our recursive stack. If you see that, let's say you were checking for x equals to the first value for each and every in this grid, and you filled all the empty values except for the last empty one. At the last empty one you realize कि आपने जो वैल्यू पुट किया वो गलत है, तो आप एक बार बैक ट्रैक करोगे, फिर एक बार बैक ट्रैक करोगे, तो टोटल एलिमेंट्स कितने n क्रॉस n. तो रिकर्सिव स्टैक स्पेस में जो वर्स्ट केस रिकर्सिव स्टैक स्पेस में जो वर्स्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हो जाएगी n क्रॉस n हमारी, correct? Great, let us end this video on the good note, and let us meet in the next version of our backtracking playlist. And till then, keep learning, keep going, bye bye, and take care, guys. Few last thing at the last, that you can start and fork my DSL repository to get help with the source code, and you can connect to me on my Instagram and LinkedIn to
for any doubts or any guidance if you require, right? So till then, guys, keep learning, keep growing. Bye bye, and take care.